Students, last time we did the purchase procedure for the medical supplies, and today we are doing the purchase procedure for non-medical supplies. The non-medical supplies includes all the items ranging from broom to ambulance parts, and it also includes furniture, stationery, linen, material for laundry, detergent, soaps, hand washes, phenyls. Then it also includes the dietary kitchen equipments, food items, raw material, the perishable item, non-perishable items, that is fruit, vegetable, pulses, flour, then dairy products. All these are non-medical supplies which we need in the hospital in the regular way. For this no, these non-medical supplies, we use the group purchasing procedure. For a group purchasing procedure, we divide the items into three types or three sections. That is, items where the purchase value is rupees 5,000 or less, the items where purchase value is more than 500 or less than 50,000. Sorry, first one I told you 5,000 is 500 or less, second one is more than 500 and less than 50,000, and the third one is items where the purchase value is more than 50,000. So we have splitted the similar items, the items where purchase value is rupees 500 or less. These items are of large requirement, and they require the purchase every day. Purchase every day means like fruit, vegetable, है ना. Then such purchases are very frequent, and they are handled by the subordinate staff. The single most factor that is important here is that persons responsible for such purchases must have high integrity, means they should have the ethical value in them, because each and every time the purchase officer, purchase manager cannot be involved in all this, or top management cannot be involved in all these activities where the purchases are very frequent, or they are very every day. So to maintain the ethical values, the top management should ensure that the government agencies should be encouraged. The use of authorized agencies or government agencies should be encouraged, so that there is no fraud cases, or there is no theft in such type of purchases. The second one is items where purchase value is more than 500 but less than 50,000. For such items, the purchase department should have the complete market knowledge. Manufacturers, distributors, wholesalers should be known in advance. The good method is the supplier should be registered with the hospital, the same as we did with the medical supplies. When the demand is finalized, our vendors are finalized, we give them quotations, we receive the quotations from them, and finalization is done on the basis of lower rate without sacrificing with the quality. So these can also be done by floating public tenders, and the system is also called limited tender system. The third purchase procedure is when the value of purchases is more than 50,000. The items that are involved in this have high considerable financial implications, so top management has to be considered. The firms has to be seen. The inquiries can be made through newspapers. Maximum possible publicity should be done. The methodology is same as we did in case of running rate contract. Running rate contract was that we are not fixing up the quantity, but we are fixing up the specific time. So this can also be done by open tendering system. So apart from all these purchase procedures, we can also purchase by having the procurement department
in the hospital, which whose aim is to obtain the right quantity at the right quality at the most economical price. So this was all with the procedure of purchase procedure with the medical and non-medical supplies. So in some cases, few fundamentals should also be considered when agreements become a contract. First of all, we do the agreement, then we move into the final contracts. So before moving from agreement to the contract, we should consider some of the factors, like there should be free consent from the parties. That is, free consent means that yes, they want to move into the contract, into the legal terms and conditions. The objectives must be within the framework of law. The persons entering into the contract should have attained the majority of age, that is more than 21 years of age. They should have sound mind, sound knowledge, and they should not have any disqualified any contract in the near future. The person should agree on the same thing, same specification, same standard, same quality, quantity, price. And when there is कंसेंट मीन्स वर्बल कंसेंट, अगर वो लोग कहते हैं फेस टू फेस कहते हैं कि येस एवरीथिंग इज़ ओके, देन ओनली दे शुड मूव इनटू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट. So now various points should also be considered once the parties had entered into the contract. It become when जब वो contract में बंध जाते हैं, then it becomes binding on them कि उनको सारी terms and conditions contract की पूरी करनी है. So they should take care कि if the party fails on time, contract becomes voidable. ठीक है. एंड इंटेंशन ऑफ पार्टी बिकम्स द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब दे कैन नॉट, मतलब अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एंड उस केस में जो भी पेनल्टीज, जो भी लॉस होता है, वो उनको कंपनसेशन भरना पड़ता है. एंड कंपनसेशन या कंपनसेशन की डिमांड करने से पहले उनको प्रायर नोटिस भेजा जाता है. सो ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव्स टू बी एंटर्ड इनटू दिस. अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर टाइम पर नहीं होता है, या फिर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है. सो दिस वॉज ऑल विद द परचेज प्रोसीजर. The functions, duties and responsibilities of purchase departments, these are all same which we have studied before. कि right quality, right quantity होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव प्राइस मीन्स इकोनॉमिक प्राइस होना चाहिए. कॉस्ट रिडक्शन मीन्स कि हमें कहते हैं जो भी प्राइस होना चाहिए वो हमें कॉम्पिटिटिव बाइंग, नेगोशिएशन, ये सब करके लेना चाहिए. देन ऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशन हमारे पास होनी चाहिए बिफोर परचेजिंग एनीथिंग. हैवी अमाउंट, अगर कहते हैं हमारा अमाउंट फंड्स हैवी है, देन 50% शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द परचेजेस. तो वहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट को देखना है कि हाउ विल दे अरेंज फॉर द फंड्स. देन प्रॉपर डीलिंग विद द सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ डील करना है. शॉर्टेज है, रिजेक्शन है, स्पेसिफिकेशंस है, ये सारा देखते हैं हम सप्लायर्स के साथ डील करेंगे. देन स्टॉक कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल हमने करना है. देन अगर कोई डिले हो जाता है सप्लाईज़ में, तो उस केस में डिपार्टमेंट आगे कैसे चलेगा. लाइक वी हैव सीन, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कोटेशंस फाइनल करते हैं, तो वी हैव थ्री प्रेफरेंसेस मीन्स कि हम उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस. अगर पहले वाले ने नहीं पूरा किया तो वील गो फॉर सेकंड प्रेफरेंस. एंड जो भी आपका उसमें डिफरेंस आएगा अमाउंट में, वो फर्स्ट प्रेफरेंस विल हैव टू पे. देन मोस्ट इकोनॉमिक मटेरियल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब हमने देखना है. देन पेमेंट शुड बी प्रॉम्प्ट. एंड अगर कोई सरप्लस है, सरप्लस स्टॉक है या फिर स्क्रैप है, देन हाउ वी हैव टू डिस्पोज इट ऑफ. ये सारा हमारा फंक्शंस हैं ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट. सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
हायरार्की ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, जिसमें हमने परचेज मैनेजिंग डायरेक्टर, देन जनरल मैनेजर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर में फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज पर्सन सब आते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर होगा, देन सुपरवाइज़र होगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए होगा, देन वील हैव द डिफरेंट डिफरेंट बायर फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक हार्डवेयर का अलग है, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का अलग है, स्टील का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अलग है, फैब्रिकेशन का कोई मटेरियल है वो अलग है, देन जो रिकॉर्ड मेकिंग है उनमें क्लर्क्स हैं अलग अलग। So this is the example of organizational hierarchy, and वेरियस फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। ये आपका परचेज फंक्शंस का एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो ऊपर लिखा है परचेज फ्लो, फॉलो अप, इनवॉइस, रिकॉर्डिंग, ट्रैफिक, रिसर्च, सैल्वेशन, ये सारी चीज़ें तो आपकी कॉमन ही है जो हमने अभी तक पढ़ी। इसके नीचे उन्होंने क्या किया, कमोडिटी के ग्रुप्स बना दिए कि नॉन फेरस है, केमिकल है, फैक्ट्री है, हार्डवेयर है, ट्रक, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ऑफिस स्टेशनरी, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल। नाउ अगेन ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो इसको आप अपना हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, लाइक अलग अलग जो हम करते हैं, लाइक मेडिकल सप्लाईज, नॉन मेडिकल सप्लाईज, फिर उसमें नॉन मेडिकल सप्लाईज में सर्जिकल सप्लाई, सॉरी मेडिकल में सर्जिकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आप उसको कमोडिटीज़ को ब्रेकअप कर सकते हो। एंड देन देर इज़ नो चेंज इन वेंडर फॉलो अप, फील्ड मैन फॉलो अप, देन ऑर्डर करना है, देन स्टैटिस्टिक स्टडी, डिमांड्स, ये कुछ नहीं चेंज होगा। देन सेटेनोग्राफिक रिक्वेजिशन होता है, परचेज ऑर्डर बनाया जाता है, रिसीविंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, ये सब सेम रहेगा। So these are the various functions of the purchase manager and the purchase department. So we have completed with the functions, organizational structure, and the purchase of non-medical supplies in this session. Okay, thank you class.